let's start with our new topic, that is inheritance. So already we have seen the definition of inheritance and few things about it. So what is inheritance? Take an example. That I had given an example of your features. That means you might have your eyes like your mother or father, or your what we can say, your face cut, etc. you have got from your either of the parents, that means either mother or father. So this is nothing but inheritance. So what is the concept of this inheritance in the programming language, that is object oriented programming? So what does it allow? Suppose I have one class declared, I have some attributes of it and some functionalities. So when I want to define some new class, in which again I have to use the same attributes as well as those functions, and along with it some extra things. So instead of writing the new class with all the existing things, I will be using that already defined class, and only the extra features which I want, I will be defining those in the new class. Once again I'll repeat. Suppose I'm having one class in which I have few attributes and few methods. Now in later part I want to define some new class in which I require some of the attributes of the previous class which is already declared, already defined, and some of the functions of that class. So instead of again repeating or again defining those methods and those attributes in a new class, instead of doing that, I will be using already existing attributes and methods of the previous class, and only the things which I want to define newly, that will be declared in the new class. So this is the concept of inheritance. That means use the already defined classes, right? So this concept is for the reusability. Let's see one by one. So inheritance enables us to define a class that takes all the functionalities from the parent class and allows us to add more. Inheritance is a powerful feature in object-oriented programming. It refers to defining a new class with little or no modification to an existing class. The new class is called derived or even child class, and the one from which it inherits is called the base class or the parent class. So here I have discussed in terms of the old class and the new class. So the old class is nothing but your parent class or the base class, and the new class which we have designed newly is nothing but your child class or the derived class. Let's see the syntax for it. So I have defined over here some base class, that is class base class and its body. This is nothing but syntax. And then class derived class, again remember what I have done while defining the derived class. I have passed the name of the base class as the parameter to the new class. So this base class name is nothing but name of your old class, that is original class, that is the base class or the parent class. So name of that class is to be mentioned as the parameter to the derived class, and then we can have the body of the derived class. Let's directly move to the example so that you will understand it. So here I have defined a class named polygon. So polygon means it may have 3 sides, 4 sides, any number of sides. So depending on that, if the polygon is having 3 sides, we called it as triangle. If it is having 4 equal sides, then we call it as a square, and likewise. So now I have defined a class named polygon. In that I have defined the initial method, so self and number of sides. So basically whenever I will be creating an object, while creation of the object I will be passing the number of sides to that object. So depending on the number of sides,
it will be considered to be the object of a triangle, of a square, and likewise. So here self dot n is equal to number of sides. Now see, it is not necessary in that object you should also have the name of parameter to be same. If you remember, I have already told you that it's not necessary, like in dog class we have seen, or in person class we have seen, left hand side and right hand side both name of the attributes were same, but it is not necessary, it is not compulsion that they should be same. So instead of here writing self dot number of sides, I can write simply n. So self dot n is equal to number of sides. That means the parameter which you are passing, that will be assigned to the n attribute of that object. Now what here I have done, I have taken, or I have created a list for the taking the length of that what we can say sides. Yes, length of the sides. So for that I have created an list. So 0 for I in range, that means it will start from 0, and in bracket range is given up to the number of sides. So it is going to start with 0 and it is going to end with number of side minus 1. So this is nothing but one of the method again to create a list. Then so the name of the list is nothing but sides. Now I am trying to with this method input sides, I am trying to take the length of the method, length of the side. So self dot sides is equal to, so again whatever value I will be taking it to be as a float, because by default Python gives me as a string. So I want to convert that string into float, so that's why I have written over here float. In bracket again input function. So input function, as we know, it allows us to take the input from the user. So I have displayed a message enter side, that means the length of the side, and again just to display the of which side's length you want, that's why I have written there I plus 1, that means enter side 1, enter side 2, enter side 3, likewise I had written, and then again it will be saved in what, in the, so the user who is going to enter the length of the side, so it will be stored in the list whose name is sides. Then I am defining the another function for displaying the length of the sides. So again I am using the for loop, and in that I am trying to display the length of those sides. So this function is being used for this displaying the length of the sides. Now next, now see, this is the base function who is having different 3 methods. First of all is by default the init method, then I am having another function for taking the inputs, that the how many sides I want and also the length of the side, and next function is displaying the sides. Now even if I am having a triangle, square, kite, rhombus, parallelogram, etc., in every case it is compulsory that I need to have the length of the sides and I want to display the length of the sides. So these 2 functions, definitely while making a class of a triangle I will be requiring these 2 functions, while making a class of a square, while making the class of a rhombus, parallelogram, etc., these 2 functions will be compulsory. So when I will be developing, when I will be creating a new classes, so in that case I need to write these 2 functions or these 2 methods again and again. So definitely it is nothing but redundancy, that means again I have to write the repeated code for these things. So instead of writing this code again and again, I have a facility that I will be using the already written code again in the new class by using the concept of inheritance. So now let's see how we are going to use it. So as I have already told you the syntax, I just need to pass the name of the base class of whose properties I want to access or whose properties I want to use in the new class. So see, here I have declared a class named triangle and I have passed the name of base class. So base class name was polygon. So I have passed its name and now I am defining the new methods in that. So again init method, as it is compulsory, so we are writing it, and then see, if
I want that my init method should be executed, that means I should be allowed to use the init method of base class, then again in this init method I should write I should explicitly call the init method of base class. Remember these two lines, understand this. See, I have declared the class triangle, in that I have passed the name of the base class. After that I have written the init method of the triangle class. But as we know, we are going to we have the init method of base class also, so directly we cannot access that init method of base class. So for that purpose, here in this new class init method we are calling explicitly the init method of old class. So polygon, which is a base class, which is a parent class, so its name dot init, so we are calling that along with the parameters. Now see, for triangle we definitely know it is going to have 3 sides only. Have you heard about this, that triangle is having 4 sides or 5 sides? No. If it is having a 4 side, we'll call it as square, you can say. So depending on the, but obviously length of the sides. So now we have created a triangle class. So we know that triangle is having 3 sides. So by default in the init method of parent class we will pass the parameter 3 for the triangle. And now we can have our own important, that is whatever functions you need to define, that will be defined in the new class. So for triangle, if you want to calculate the perimeter, you want to calculate the semi perimeter, if you want to calculate the area, so likewise you may define your own different functions which will be related to the triangle. So as you can see over here, what I have done, I have declared 3 parameters, that is ABC in the find area, and to that parameters I have assigned the self dot sides, that means the list values, list 0, 1, 2, that means these index values will be assigned to these what we can say variables ABC. Now here just I have actually for the function, for the method name I have written find area, and below I have just calculated the semi perimeter. So just ignore the name of that method. So here I have calculated the semi perimeter and I am displaying the semi perimeter's value. Now the important thing comes about creating an object. See now, if I want to access the 2 methods of the parent class, so you may say create the object of the parent class, right? But because of this inheritance concept, what I am getting the facility, I will be creating the object of the derived class, that means the child class, and still I will be able to call the methods of the parent class. See here, I have here declared or created an object T of the derived class or the child class. So triangle is nothing but your derived class or the child class. See, and in below that, take a look, I have called the function that is T dot, that is object dot input sides. So this input side function is being defined in the base class, that is the parent class. Still I am able to call it by using the object of the derived class or the child class. So instead of getting a bit confused, I'll just call the names as parent and child. So parent class methods can be called with the help of child object, right? So again T dot display sides, that is disp sides. Again this is method of the parent class, and still you are allowed to use that method, still you are allowed to use that method or allowed to call that method with the help of the child object.
and the again but obvious child object will be able to access its own methods also. So t dot find area. So this is how you will be able to get, or you will be able to use the one class properties in the another new class. So this is what you are going to get the output. So enter the side 1, enter the side 2, enter the side 3, that is input sides this method, then again display side method, and then again find area method. So this is how you are going to get the output. I hope you are understanding what we are doing in inheritance. ऑलरेडी जो चीज़ें है उसको दोबारा क्यों लिखे, राइट वो ऑलरेडी है एक क्लास में, तो बस आप उसको इनहेरिट करो, उसको यूज़ करो. तो इनहेरिट कैसे कर सकते हैं हम, नए क्लास में जब आप नया क्लास क्रिएट करते हो उसके अंदर बस वो क्लास का नाम डाल दो जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसके फंक्शंस, जिसके एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करना चाहते हो. बस एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि इनिट मेथड में जो पेरेंट क्लास है जिसकी प्रॉपर्टीज आपको एक्सेस करनी है उसका इनिट मेथड एक्सप्लिसिटली यानी खुद होके हमें कॉल करना पड़ता है. दैट मीन्स पॉलीगॉन डॉट, बिकॉज पॉलीगॉन जो है वो बेस क्लास है, तो डॉट इनिट और सेल्फ, और यहाँ पे जैसे हमने पैरामीटर्स पास किए हैं लाइकवाइज. सो दिस इज द वे इन विच यू कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू द अदर. सो इसके आगे हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल. चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इनहेरिटेंस वर्क करता है. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, चलो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नाम ही दे दिया, पहले वाले को पेरेंट, दूसरे वाले को चाइल्ड. सो पेरेंट क्लास में क्या है, अब यहाँ पे मैंने इनिट मेथड और वो सब इग्नोर किए हैं कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन वो मेथड्स इनिट मेथड बाय डिफॉल्ट होती है किसी भी क्लास में. सो कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. यहाँ पे आपने तो बताया था कि क्लास डिफाइन करते हो, उस वक्त आपने कहा था कि इनिट मेथड लिखनी है, और ये एग्जाम्पल में आपने नहीं लिखी है. तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं शॉर्ट में बस लिख रही हूँ, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इनिट मेथड कंपलसरी लिखनी है. सो पहले का जो क्लास है वो पेरेंट क्लास है, उसमें मैंने एक मेथड डिफाइन किया है फर्स्ट नाम का, और उसमें मैंने लिख दिया है, एक मैसेज प्रिंट कर दिया है फर्स्ट फंक्शन. उसके बाद मैंने दूसरा क्लास डिफाइन किया है जिसका नाम है चाइल्ड, और ब्रैकेट के अंदर मैंने किसका नाम दिया है, पहले क्लास का जिसका नाम है पेरेंट, और उसमें भी मैंने एक नया वाला मेथड डिफाइन किया है जिसका नाम है सेकंड, और उसमें भी मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है सेकंड फंक्शन. अब देखो मैं ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रही हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ सेकंड वाला क्लास, दैट मीन्स चाइल्ड क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं फर्स्ट फंक्शन भी कॉल कर सकती हूँ. अब ये फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, ये फर्स्ट फंक्शन है पेरेंट वाला, और उसके बाद मैं खुद सेकंड का भी जो दैट मीन्स चाइल्ड का भी जो फंक्शन है या मेथड है वो भी कॉल कर सकती हूँ. सो इससे मुझे आउटपुट मिलेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इस तरह से. सो आपको समझ में आ रहा है आई होप कि इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है. चलो इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते. अब देखो क्या कहा था मैंने कि ये जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए कि चाइल्ड पेरेंट का कैसे वर्किंग होता है शॉर्ट में वो मैंने आपको बताया. सो यहाँ पे देखो क्लास पेरेंट मैंने डिफाइन किया, उसमें इनिट मेथड मैंने कॉल कर दिया, तो उसमें मैंने बस फर्स्ट नेम और फर्स्ट एज ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो अगेन ये अब आपको पता चल गया कि डेटा एट्रीब्यूट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम को मैंने क्या कर दिया, एफ नेम असाइन कर दिया, सेल्फ डॉट एज को मैंने एफ एज असाइन कर दिया. अब मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है व्यू नाम का, तो ये क्या करेगा, ये बस प्रिंट करेगा इन दोनों वैल्यूज़ को कि जो पैरामीटर्स आपने पास किए हैं उनकी वैल्यू, मतलब सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट एज. तो आप इसको और अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मैंने बस इसको सिंपली ऐसे ही प्रिंट कर दिया. अब मैंने एक नया क्लास बनाया चाइल्ड नाम का, और किसको इनहेरिट किया, मैंने पेरेंट को इनहेरिट किया. अब इसमें भी मैंने क्या किया, इनिट मेथड कॉल किया, जिसको भी मैंने क्या किए, पैरामीटर्स एफ नेम और एफ एच पास कर दिए, और पेरेंट मेथड का इनिट मेथड भी मैंने यहाँ पे कॉल किया विद द सेम पैरामीटर्स.
अब आप कहोगे मैम पिछले प्रोग्राम में तो आपने ट्राइंगल के वक्त डायरेक्टली उसका वैल्यू पास कर दिया था 3। ओके, नॉट अ बैड थिंग, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल की साइड्स चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि उसका फर्स्ट नेम, उसका एज क्या हो सकता है, राइट। इसीलिए मैंने पैरामीटर्स को, दैट मीन्स वेरिएबल्स को या फिर डेटा मेंबर्स को मैंने एज इट इज रखा। और फिर मैंने यहाँ पे और एक नया एट्रीब्यूट दे दिया, सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू शर्मा। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम नाम का कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा और एक पैरामीटर बना दिया है लास्ट नेम, और जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट नाम क्या कर दिया, शर्मा। अब ये केस में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो उसका लास्ट नेम जो है वो शर्मा ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। आप क्योंकि आप बाहर से पैरामीटर पास नहीं कर सकते, इसने यहाँ पे डिफॉल्ट वो लास्ट नेम को वैल्यू दे दिया है शर्मा। सो किसी का भी फर्स्ट नेम कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, उसका लास्ट नेम क्या आएगा, आपको शर्मा ही आएगा, राइट। सो अब देखो, बस यहाँ पे इनिट मेथड में ध्यान रखो कि जो पैरामीटर्स मैंने पेरेंट्स में दिए हैं वही पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे इनिट मेथड में भी दिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस केस में हमने देखा था ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं था। देखो यहाँ पे पॉलीगॉन में उसका 2 पैरामीटर था, एक सेल्फ था और एक साइड्स था, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्राइंगल के इनिट मेथड में बस सेल्फ दिया। सो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों के इनिट मेथड में पैरामीटर्स सेम चाहिए, बट जस्ट यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैंने दोनों के पैरामीटर्स सेम रख दिए। अब यहाँ पे भी मैंने एक व्यू फंक्शन लिख दिया है, सो डिफाइन व्यू, और उसको पैरामीटर पास कर दिया सेल्फ। सो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, कोर्स नेम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। सो उसके बाद फर्स्ट नेम प्रिंट किया, एज प्रिंट किया। सो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर दी, राइट। सो अगेन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्रिएट किया चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, राइट, और उसको मैंने वैल्यूज पास कर दिए पाइथन, और एज पास कर दिया 28। सो अब क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये व्यू फंक्शन कॉल होगा, कौन से, चाइल्ड क्लास का, राइट। तो यहाँ पे जब वो देगा सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, तो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कहाँ का है, वो पेरेंट क्लास का है, तो वो डेटा मेंबर यहाँ पे कॉल होगा। यहाँ पे कोर्स नेम, तो वहाँ पे वो फर्स्ट नेम, एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फर्स्ट नेम होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कोर्स नेम। यहाँ पे होना चाहिए था फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद पेरेंट क्लास का जो फर्स्ट नेम डेटा मेंबर है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। सो लाइकवाइज यू विल बी एबल टू प्रिंट any of the data which you want, and you will be able to access the functionalities of the parent class in the child class. So this is all about inheritance. अपना next topic है types of inheritance. यहाँ पे बस मैंने 3 मेंशन किए हैं, लेकिन एक्सप्लेन करते वक्त मैंने ट्राई किया है कि और भी जो 2 टाइप के इनहेरिटेंस है वो एक्सप्लेन किए हैं नोट्स में। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पे आपको और 2 ऐड करने हैं। एक जो है, पहला तो है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, और जो 2 है, एक हायरार्चिकल है और एक है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि एक 1 बाय 1 सब देखते हैं कि कौन से टाइप्स के इनहेरिटेंस हैं। तो अगेन इनहेरिटेंस का मैंने फिर से एक बार जस्ट एक लाइन में लिख दिया है कि इनहेरिटेंस इज कंसेप्ट वेयर वन क्लास एक्सेसेस द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। सो कौन से टाइप्स के हैं, पहले तो है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो सिंगल में देखते हैं। सो अब तक के जो हमने इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स देखे वो था सिंगल इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है कि चाइल्ड क्लास जो है वो एक ही पेरेंट से क्या करेगा, प्रॉपर्टीज एक्सेस करेगा। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही पेरेंट क्लास होगा और एक ही चाइल्ड क्लास होगा। जैसे मैंने पहले सेंटेंस का क्या कहा कि चाइल्ड क्लास जो है वो एक ही पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज लेगा, लेकिन चाइल्ड क्लास भी वो अकेला ही होगा। सो जब पेरेंट क्लास
और चाइल्ड क्लास दोनों एक एक ही हो तो उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो अब तक जो हमने दोनों तीनों एग्जाम्पल्स देखे, जैसे पर्सन का, ट्राइंगल का, दैट इज पॉलीगॉन का, तो ये सारे जो है दे आर नथिंग बट सिंगल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल वेयर parent class was also one and child class was also one. So देखते हैं थोड़े से points about single inheritance. So in Python single inheritance is a derived class only is derived that sorry in Python single inheritance a derived class is derived only from a single parent class and allows class to derive behavior and properties from a single base class. जो मैंने पहले कुछ अलग टर्म्स में बताया था कि एक ही सिंगल पेरेंट ही होगा, उसी के बस प्रॉपर्टीज वो एक्सेस करेगा. So thus enables code reusability of parent class and adding new features to a class makes code more readable, elegant and less redundant. So मैं इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने इनहेरिटेंस की कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दी थी एट दैट टाइम आई टोल्ड यू इट गिव्स रीयूजेबिलिटी, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वही यूज करो. सो दिस इज नथिंग बट रीयूजेबिलिटी. देन लेस रिडंडेंट मतलब रिडंडेंसी का मतलब क्या, कि जैसे आपको कभी कभी आदत होती है कि आपकी जो मोबाइल में फ़ोटोज़ है वो आपके ड्राइव में भी अपलोड करते हो, उसके बाद लैपटॉप में भी रखते हो, लैपटॉप में भी एक ही ड्राइव में रखने की वजह और दो जगह पे सेव करते हो. इसका मतलब क्या, आप सेम डेटा सेम थिंग्स बहुत सारे लोकेशंस पे बहुत सारी जगह पे रखते हो. सो दैट इज नथिंग बट रिडंडेंसी. तो यहाँ पे भी वही हो सकता था ना कि जो ऑलरेडी एक क्लास में है अगर वही सेम चीज़ें आप दूसरी क्लास में लिखोगे तो डेफिनेटली ये आप डबल लिख रहे हो सेम चीज़ें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. सो तो बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस we can reuse the code, that means it will have less redundancy. Then next part is, and thus single inheritance is much more safer than multiple inheritance if it's done in right way and enables derived class to call parent class method and also to override parent classes existing methods. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस जैसे parent में लिखा है वैसे ही मेथड लिखे, ऐसे नहीं, वो उसको अगर चाहिए तो वो और भी बाकी की मेथड्स को ओवरराइड कर सकता है. ओवरराइड जैसे मैंने आपको बोला था, नाम और वो सब सेम होगा लेकिन वो काम अलग करेगा. नाम सेम, काम अलग, दैट इज़ नथिंग बट ओवरराइडिंग. सो इन प्रीवियस एग्जाम्पल भी जहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे दोनों भी मेथड्स का नाम, पेरेंट मेथड में भी उसका नाम व्यू है और इसमें भी उसका नाम व्यू है, तो नाम दोनों के सेम है बट वो काम अलग कर रहा है. यहाँ पे डायरेक्टली वो फर्स्ट नेम और एज प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली वो कोर्स नेम एक्सेट्रा वो जैसे हमने फॉर्मेटिंग किया है वो एक्सप्लेन कर रहा है. सो दिस इज नथिंग बट ओवर राइडिंग द मेथड्स, राइट. सो उसके पेरेंट में भी उसका नाम सेम है और चाइल्ड में भी उसका नाम सेम है, बस उसके काम हम अलग अलग बताते हैं. सो दिस इज नथिंग बट योर ओवर राइडिंग. सो अगेन यहाँ पे सिंटैक्स है, पेरेंट क्लास नाम, पेरेंट क्लास कोड और चाइल्ड क्लास नेम और ब्रैकेट में पेरेंट क्लास का नाम और फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास का कोड. सो दिस इज नथिंग बट सिंटैक्स. सो डायग्राम भी आपको ठीक से याद रखनी है, ऊपर पेरेंट क्लास है, नीचे चाइल्ड क्लास है और फिर कैसे वो इनहेरिट करता है. तो यहाँ पे फिर से मैंने वही एग्जांपल दिया, यहाँ पे बस एडिशन का नंबर दिया है, बस क्लासेस को मैंने नाम जो है वो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास ही दिया है सो दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए. सो पहले मैंने इनिट मेथड बना दिया पेरेंट क्लास का जो कंपलसरी है, उसके बाद मैंने दो वैल्यूज़ पास कर दिए एज अ पैरामीटर इनिट मेथड को, वैल्यू 1 और वैल्यू 2. तो उस मेथड में मैंने क्या कर दिया, वैल्यू 1 को उस ऑब्जेक्ट के num1 पैरामीटर को असाइन कर दिया, वैल्यू 2 को उस ऑब्जेक्ट के num2 को असाइन कर दिया. तो अब मैंने यहाँ पे दो मेथड्स डिफाइन किए हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे वो दो मेथड्स होंगे जहाँ पे एक मेथड एडिशन करेगा, एक मेथड मल्टीप्लिकेशन करेगा. अब मैंने क्या किया है, चाइल्ड क्लास बनाया है और उसको इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास से. अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जो फंक्शन है जैसे है वैसे ही मुझे यूज़ करने,
मुझे कुछ और कोड भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास, वहाँ पे मैंने पास्ट स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस बताया था कि मैंने अभी क्रिएट करके रखा है एक डिराइव्ड क्लास, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जो पेरेंट में है वही यूज़ करना है, अभी मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं चाइल्ड क्लास में। तो मैंने क्या कर दिया, पास्ट स्टेटमेंट यूज़ कर दिया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसको मैं वैल्यूज़ पास कर रही हूँ, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, और फिर मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास का मेथड्स कॉल कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस एक चीज़ रह गई मुझसे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट फंक्शन में कॉल करने थे, सो मैंने साइड में ऐसे लिख दिया। सो ये समझो एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट मेथड में, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मैं कर रही हूँ तो वहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, वहाँ पे मैंने खुद से कुछ प्रिंट नहीं किया, तो वो जो रिटर्न कर रहा है वो तो मुझे प्रिंट करना है, इसीलिए मैंने जो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिखा है वो जो रिटर्न कर रहा है वो प्रिंट होना चाहिए, इसलिए मुझे ये चीज़ें प्रिंट फंक्शन में लिखनी है। सो दैट्स वाई प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 डॉट एडिशन, प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 डॉट मल्टीप्लिकेशन, और फिर मैंने और दूसरे जो मेथड्स बना दिए ऑब्जेक्ट 2, अगेन उसको 20 और 30, मतलब बस पैरामीटर्स चेंज किए और मैंने वही मेथड्स कॉल किए, तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा, एडिशन इज, मल्टीप्लिकेशन इज, एडिशन इज एंड मल्टीप्लिकेशन इज। तो this is how we are using the inheritance, that is nothing but single inheritance. Next type of inheritance is multiple inheritance. Now you might have understood by the name itself what multiple inheritance can be. So as here I have shown in the diagram, that means the child class will inherit the properties of more than one parent class. That means there will be more than one parent classes, and a single child class will inherit properties from these two or more than two parent classes. So see, in multiple inheritance, one child class can inherit multiple parent classes. Let's see the example. So here I have a class named father, then again I have just ignored to write the init methods, but while writing in examination you make sure that you will be writing the init methods. So father name, here I have just kept it blank, I have assigned no value. Then I have defined a method named again father, and I have just printed the name of the father. Same way I have written another class with the name mother. Again I have initially not given any value to it, and I have printed mother name in the method mother. So now I am creating a child class named as daughter with the two parents, that is father and mother. Now here I have defined a method named parent, and in that I am printing the name of a father and a mother. So now see, so as you see, when in the parent classes, that means in the father and mother, I have not given any values to the attributes, that is father name and mother name. Those I can directly provide at the time of execution or at the time of creating the object. So as you can see over here, I have created a child class objects, that is S1 is equal to daughter, and there I have assigned S1 dot father name as Srinivas and S1 dot mother name as Anjali. So when I will be calling the method of a child class, that is parent, these particular two values will be assigned to the data members of the parent classes, and I will be able to print those names. So S1, when I will be calling the S1 dot as a parent, so it is going to print the name of a father and mother. So see, here the data members are self dot father name, self dot mother name. So these two are the data members of above two parent classes, that is father and mother. Still I am able to access them in the daughter class just because of the inheritance. So the output will be father Srinivas and mother Anjali. So this is how we can perform
that means we can access the properties of more than two parents in one child class. So this is all about multiple inheritance. Another next type of inheritance we are having multi-level inheritance. Understand the terms, multiple is different, multi-level is different. So its name only suggests us what it can be. So in multi-level inheritance, a class can inherit from a child class or the derived class. That means I can derive the class from already derived class. That means many a times we say that we both brothers look same. So younger brother has taken some of the features of the elder brother also. That means we are inheriting the properties of another derived class, not only the parent class but also the derived class. So that is nothing but multi-level. Level wise you are inheriting the data members and the methods of the previous derived class. So here, as you can see, in this type of inheritance, a class can inherit from a child class or a derived class. That means when a child class becomes a parent for another child class. So here already derived child class will become parent of another new class. So just here you can see the example, class parent. Here I have defined. So again I have ignored to write the init function, but you don't forget to write the init functions or the init methods. I'll suggest you on the internet also you will be having many examples, and better to go for the internet, refer Rima Thareja, as because of unavailability of the resources right now I don't have Rima Thareja, that's why I'm trying to use these examples. You just once go understand the concept in the video and try to take the examples from the Rima Thareja. No issues at all. Even if you are going to write these examples also in your examination, definitely there will be no reduction of marks, because there is no harm writing these examples also. But it will be, I will recommend you that try to prefer those examples also. So here I have declared one class with the name parent. So def function 1 self, and this is function, just I have printed a message over it. Then another class I have derived from the parent class. See, the class, then child, and then in bracket I have written parent. That means I have derived this child class from the parent class. And again I have just defined a method with the name function 2, and I have just printed a message, this is function 2. And then next then I am having another class, that is child 2, which I am deriving or which I am inheriting from the already derived class, that is child. So here I have written the child as, or here I have derived child 2 class from the child class. And then again I have defined a method, that is, this is function 3. So now I am creating the method of, sorry, I am creating the object of a newly defined class, that is child 2. So OB is equal to child 2. I have created object of the child 2, but still I am able to call the functions of previous two classes. So it is but obvious I will be allowed to call the method of a child class, right, because I have inherited from it. But also, as this child is inherited from the parent class, I am allowed to call the methods of that class also. So as you can see over here, ob dot function 1, ob dot function 2, ob dot function 3. I forgot here to write down the output, but definitely you are going to get the output as this is function 1, this is function 2, this is function 3. You may execute the same program in your online editor and check it out whether you are going to get the same output or not. So this is all about multi-level inheritance. Now next type of inheritance we are having, that is hierarchical inheritance. So what do you mean by hierarchical inheritance? That means now here we will have single parent but multiple childs.
So as we have seen in multi-level inheritance, multiple inheritance, many parents, one child. In hierarchical, we are having single parent and multiple childs. So that is nothing but hierarchical inheritance. So again I have taken a small example. Hierarchical inheritance involves multiple inheritance from the same base or parent classes. That means multiple derived classes from the same base class or same parent class. So as you can see over here, I have declared a parent class and I have just return a method with the name function1 and I have printed a message, this is function1. Then I am having a child class which I have derived from the parent class and again defined some method function2 and I have printed the message, this is function2. Then again I have defined another derived class, that is child2, from the parent itself, from the parent only. So if I am defining this child2 from the child, then it becomes multi-level. When I am defining this child2 from the base only, that is from the parent only, then this becomes hierarchical inheritance. So thus I am creating the object. So now child class is different, child2 class is different. So they both are inherited from the base, that is parent class. So definitely we need to create two separate objects for these two separate derived classes. So here I have created an object for both the classes, that is child and child2, that is OB and OB1 respectively. So I will be calling the function of either parent class or the class itself. So it is going to give me the output. So when my child class object is calling the function of parent class, that is function1, so it will print this is function1, and by another child is calling the function of here I have done some mistake. It should call function3, that is OB1, which is a child of child2, will be calling the function3 and this is going to print this is function3. Sorry for the mistake. Here child2 object will not be allowed to call the object of the other derived class, that is child class. So this is not going to work. Likewise you may execute it and check it and accordingly make changes. Only what changes you will make, OB1 dot function3 you will be calling, so you will be getting the output, this is function3. Now the last type of inheritance is hybrid inheritance. That means it will have everything mixed. Either you will have two parents, one derived or two derived classes likewise. So it will have all the combination of previously discussed inheritance. So hybrid inheritance involves multiple inheritance taking place in a single program. So in this case parent class is there, so child class is derived from the parent class, child 1 is again derived from the parent class and child 3 is derived from the parent as well as the one of the derived class. So this is how you will get the hybrid inheritance. Then I have created the object of a child 3 which is derived from the parent as well as the derived class, that is child 1, and it will be calling the, or it will have the functionality to call the function of either parent class or even child 1 class, that means function 3 also, and thus you will get the output that this is function. Now here for just understanding I have called the method of parent class, that is function 1, so that is going to print me the message, this is function 1. So while understanding all the types of inheritance, you can make the small changes in the classes and you will be able to get the output. So I'll suggest you once just try to write down this code on online editors and execute it. If you are having any doubt in the concept of inheritance, please contact me, but before contacting I'll recommend you once you execute it in the online editor and refer Rima Thareja's examples. Okay, thank you.